Assalamu alaikum to all of you. So today I'm here with the lecture on gross anatomy and histological features of external and middle ear. Right. So these are the objectives of today's lecture. That we'll be looking at that into how many parts the human ear has been divided, the components of external air, the boundaries and contents of middle air will be discussed, and the histological features of these two sections will be discussed. Inner air will be discussed in a separate lecture, right? So this is how the whole human ear is divided into three compartments: the outer ear or external ear, the middle ear or the tympanic cavity, and the inner ear or labyrinth, right? So these are the three sections we can see. This is the outer ear, here comes the middle ear, and this is the inner ear, right? The other name for outer ear is external ear, middle ear is known as tympanic cavity, and the inner ear or internal ear is the labyrinth. Now when we look at the external ear, it consists of auricle or pinna. See, this is the ear auricle or pinna, and the external auditory meatus, right? Few authors discuss the tympanic membrane. It is considered as a part of external, and in few books it is considered as a part of middle. So it is actually, the tympanic membrane is actually the line of demarcation in between the external and the middle ear, right? So we have pinna, external auditory meatus, and according to some authors, the tympanic membrane in external, right? So this picture shows that pinna, external auditory meatus, and the tympanic membrane. This whole comprises the outer or external ear. Now we'll discuss the external ear in a little detail. First of all, the auricle, the part which is the outer part, which we can see grossly in every human being. This consists of thin plate of elastic cartilage. You can feel that this is firm. It is a firm structure, not hard as bone, but it is firm. Okay? So this is because of the presence of cartilage underneath the skin. Okay? The cartilaginous plate is covered with skin, and the function of this is to collect the air vibrations or sound waves, and collection के बाद where to convey it into the air canal, right? Now when we look at the auricle, we can see various folds in it, right? See, the outer edge जो ये पूरा fold आ रहा है air का, this is known as helix, right? इसके अंदर जो दूसरी हमारे पास ये प्रोजेक्शन आ रही है, दिस इज नोन एज एंटी हीलिक्स, बिकॉज हीलिक्स के जस्ट ऑपोजिट है, दिस इज नोन एज एंटी हीलिक्स, राइट? तो आउटर रिम ऑफ द एयर इज नोन एज हीलिक्स, एंड द इनर रिम उसी की तरह है, बस छोटे साइज का है, उसका नाम है एंटी हीलिक्स, राइट? ये हमारे पास हीलिक्स एंड एंटी हीलिक्स दो पार्ट्स हो गए. नाउ कम टू दिस सेक्शन जो एकदम हमारे हेड के साथ अटैच्ड है. यहाँ पे वी कैन सी अ लिटिल प्रोजेक्शन नोन एज ट्रैगस. This is tragus, which is present at the near to the opening of external auditory canal, right? And likewise, जिस तरह helix के सामने anti helix था, इधर tragus के जस्ट ऑपोजिट वी कैन सी एंटी हेलिक्स के एंड पे एक छोटी सी प्रोजेक्शन है ट्रैगस की ही तरह, ठीक है? एंड बिकॉज इट इज़ इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, जस्ट ऑपोजिट टू ट्रैगस, तो इसका नाम हो जाएगा एंटी ट्रैगस, right? And that portion where the air piercing normally takes place, this is known as air lobule, ठीक है? So these four or five labelings you must know, that the outer rim is helix, उसके next जो inner छोटा rim होगा, that is anti helix. The medial section of air को अगर हम देखें, एक छोटी सी प्रोट्रूबेंस है, that is tragus, और उसके just
behind at the end of antihelix is the antitragus, right? Then the external auditory meatus. Picture, look at the picture first. This section is that of the external auditory meatus. ओपनिंग हमें एयर ऑरिकल से दिख रही थी एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus की, राइट? अब यहाँ से अप टू tympanic membrane is the external auditory canal. So it is a curved tubular structure that connects the auricle to the tympanic membrane, right? And the significance of this canal is to conduct the sound waves from external environment to the inner ear. ठीक है, पिना क्या कर रहा था? कलेक्शन कर रहा था, उसको आगे कन्वे कर रहा था ऑडिटरी meatus में, एंड नाउ दिस meatus is also just conveying the sound waves मजीद inside, right? सिंपल अभी कंडक्शन हो रही है. This external auditory meatus is bony as well as cartilaginous, right? क्योंकि बाहर से जो ear का हमारे पास पिना है और ऑरिकल है, it is cartilaginous, तो बाहर वाला पार्ट जो है ऑडिटरी ट्यूब का 1/3 is cartilaginous and the rest inner 2/3 are bony. ठीक है, टेम्पोरल बोन का इसमें टिश्यू, टेम्पोरल बोन का पार्ट इसमें आ रहा होता है, फॉर्मिंग द इनर 2/3 ऑफ द बोनी meatus, right? Now the outer 1/3 which is cartilaginous, उसके ऊपर जो स्किन होगी उसके ऊपर हमारे पास hairs भी होंगे और glands भी होंगे. ठीक है, so the hair follicles and glands are present in the outer 1/3 which is cartilaginous part of external auditory meatus. So this is the place where the wax is produced. And what's the significance of wax? That it, yes, it avoids getting the foreign bodies going deep into the air, right? Or any insects going inside the air. ठीक है, so this shows the components or composition of the eustachian tube. ठीक है, ये ऑडिटरी ट्यूब, ये ऑडिटरी ट्यूब है. ऑडिटरी ट्यूब का इनर 2/3 इज बोनी. ये देखो, दिस इज द टेम्पोरल बोन, द ऑरेंज पार्ट, एंड आउटर 1/3 इज कार्टिलेजिनस. ये हमारे पास पूरा कार्टिलेज है, ग्रीन. ठीक है, और इसी पार्ट में हमारे पास क्या होगा? Hair follicles and pseudomonas glands. The nerve supply of external ear is the auriculotemporal nerve coming from the third division of trigeminal and the auricular branch from the vagus nerve. The lymphatic drainage is into the superficial parotid lymph nodes, mesoid nodes and superficial cervical nodes. All these three groups are shown in the picture. ये हमारे पास parotid nodes हो गए. This is the mesoid group of nodes, and here we can see the superficial cervical nodes, right? Now let's discuss a little history of this. The external ear auricle, external auditory meatus and tympanic membrane, we have already discussed the parts. This pinna is composed of the irregularly shaped plate of elastic cartilage, right? तो अभी जो हमने बात की थी कि cartilaginous है, तो you must know that which variety of cartilage is there. If you remember, हमने cartilage की 3 varieties पढ़ी थी: hyaline cartilage, elastic cartilage and fibrocartilage, remember? So here is the elastic cartilage covered with skin. This cartilage is continuous with the cartilaginous lining of external auditory meatus, right? वही जो हमने अभी बात की, external auditory meatus, outer 1/3 is cartilaginous, inner 2/3 are bony. तो यही cartilage अंदर continue होगा, means elastic cartilage, right? So superficial portion is composed of elastic cartilage which is continuous with the cartilage of pinna. ये अब eustachian tube, उसकी auditory tube की बात हो रही है, right? तो auditory tube का जो cartilage है वो continuous है पिना के साथ, और पिना का जो cartilage है that is continuous with the auditory this auditory canal. So this is one and the same thing.
The temporal bone replaces the cartilage as support within the inner two-thirds of canal. This we have already discussed that inner two-thirds जो bony content है वो किसकी contribution है, वो temporal bone से ही आ रही है. ठीक है. The external auditory meatus is covered with skin containing hair follicles, sebaceous glands and modified sweat glands known as pseudomonas glands. If you remember अभी last slide पे प्रीवियस स्लाइड जो हमने अभी देखी है उसमें मैंने सेरुमिनस का नाम लिया था, रिमेंबर. सो दीज सेरुमिनस ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वैक्सी मटीरियल नोन एज सेरुमिन. ठीक है, एयर वैक्स जिसे कहते हैं. सो दिस एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus usually the outer one third is covered is having the hair follicles, sebaceous glands, modified sweat glands known as ceruminous glands. The hair and the sticky wax help prevent objects from penetrating deep into the meatus. Now the objects can be any foreign particles, can be any insects. Okay, this is the histological slide showing the sebaceous glands. These are the hair follicles, right, and these are the ceruminous glands. ठीक है, और ये हमें वैक्स दिख रहा है, right. Then we come to the tympanic membrane. It is a thin fibrous membrane. We can see very well over here. This is the tympanic membrane, which is obliquely placed facing downwards, forwards and laterally. ठीक है, this position is very important. It is usually asked in OSPs, right? So the location will be obliquely placed facing downwards, forwards and laterally. ठीक है. So it is concave laterally means outer surface इसकी concave होगी, inner side पे inner ear की तरफ जो होगा ये convex होगा. There is a term known as umbo which is used for the depression in center. ठीक है, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सेंटर में एक डिप्रेशन होता है जिसको हम अम्बो कहते हैं. और ये डिप्रेशन क्यों बन रहा होता है, ये डिप्रेशन बन रहा होता है बाय द टिप ऑफ हैंडल ऑफ मेलियस. We'll discuss what is malleus and what are the other bones as well in the middle layer. अभी हम tympanic membrane पे ही हैं. तो tympanic membrane outer surface जो lateral surface है, जो outer ear से हम देख रहे होंगे वो concave होगी. जो middle ear की तरफ part है that is convex. center में depression है known as umbo. और ये depression है किसकी वजह से, handle of Malleus की वजह से. ठीक है. Then there are two portions known as pars flaccida and pars tensa. You can see here. See, this is the lateral view. जैसे हम अगर from outer ear इसको देख रहे हैं, right? Center depression is umbo. So just behind this would be the handle of Malleus. Malleus is a bone of middle ear. अभी हम middle ear की bones के नाम पढ़ते हैं. ठीक है. So this is umbo, the center depression. This is the concave tympanic membrane from outer view, right? Then we can see this whole membrane. यहाँ पे जो हमारे पास ये इसकी ट्रांसलूसेंसी है, ये वाला पार्ट हो जाएगा पार्स टेंसा. ठीक है. And here we can see this a little region of opacity known as pars flaccida, right? And then behind the membrane, this shiny membrane, we can see the incus. This is one of the other bones of middle ear, right? And this is the short process of Malleus. Malleus की parts है. ठीक है. Malleus incus और अंदर होता है stapes. अभी हम आगे देखेंगे. So tympanic membrane is pain sensitive, and the supply over here is auriculotemporal nerve and auricular branch of vagus nerve, right? One second, please. Okay. Now we'll discuss the histology of tympanic membrane. The external surface of tympanic membrane is covered by thin epidermis derived from ectoderm.
whereas the internal surface is composed of simple squamous to cuboidal epithelium derived from endoderm. Right? अब क्या समझ आई बात? That the outer surface जो हमें एक्सटर्नल एयर से दिख रही है, जो कॉन्केव है, क्योंकि बाहर का रीजन पूरा स्किन से कवर्ड था, पिना भी, एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब भी, तो वो वहाँ पे एपिडर्मिस स्किन वाली ही हमारे पास आ रही है, डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म. ठीक है. और हमारे पास जो इंटरनल सरफेस है वो हमारे पास एंडोडर्म से डिराइव हुई भी है, और यहाँ पे एपिथेलियम विल चेंज, यहाँ पे हो जाएगी सिंपल स्क्वैमस टू क्यूबॉइड. Okay. Then a thin layer of mesodermal elements including collagen fibers, elastic fibers and fibroblasts is interposed between the two epithelial layers. जो outer layer है और जो inner layer है, उन दोनों के बीच में हमारे पास mesodermal elements हैं, जिसमें सारे connective tissue fibers, fibroblasts and the collagen fibers, right? तो ये इन दोनों layers के बीच में होगी. Now this membrane receives sound waves transmitted to it by ear through external auditory meatus, and now these sound waves will cause it to vibrate just like a drum. Okay, it will vibrate. Now comes the middle layer. Middle layer is located in the petrous part of temporal. राइट. मिडिल ईयर के जो कॉन्टेंट्स होंगे उसमें हमारे पास है, इट कंटेन्स ऑडिटरी ऑसिकल्स. ऑसिकल्स आर द बोन्स. सो वी हैव द ऑडिटरी बोन्स दैट ट्रांसमिट द वाइब्रेशंस more deeper, that is more into the inner ear, right? So here we can see the portion of middle ear, tympanic membrane है, सही है. और ये हमारे पास 3 ऑसिकल्स हैं, मेलियस, incus, stapes. These are the auditory ossicles, right? और ये पार्ट कौन सा आ रहा है? टेम्पोरल टू, द petrous part of temporal. ठीक है. इसके आगे यहाँ से फिर हमारा इनर एयर स्टार्ट हो जाएगा. So in the middle layer we'll discuss the boundaries, which is very important. You must know the roof, the floor, anterior, posterior, medial and lateral walls, that which structures are forming the walls. Now I am pausing for a minute. You read what's written over here, then I'll discuss it with you. Okay, just give a read to it. Okay, so in the roof we can see, first of all you have to get oriented that this view is from the outer ear, right? तो ये lateral हमें surface दिख रही है. ठीक है. यहाँ से हमने tympanic membrane हटा दी, right? So now we can see that the roof is formed by tegmen tympani, which separates the tympanic cavity from middle cranial fossa, right? This is tegmen tympani. ठीक है. तो ऊपर है middle cranial fossa. The floor is formed by thin bone that separates the tympanic cavity from superior bulb of internal jugular vein, right? Okay. Then the anterior wall, this should be the anterior wall. This bone separates the tympanic cavity from internal carotid artery, and at its upper parts are the openings into the two canals. एक हो रहा होगा auditory tube में, और एक हो रहा है canal for tensor tympani. दो openings हैं, एक auditory tube में, ठीक है, anterior, और एक हमारे पास है tensor tympani muscle के लिए. Right? This is the anterior.
The posterior wall shows the adductus to mastoid antrum superiorly. ऊपर adductus means entry, ठीक है. Mastoid antrum superiorly and pyramids inferiorly. This is the pyramid. सही है. और ये pyramidal opening किस लिए? Stapedius muscle के लिए. लेटरल वॉल, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो अभी हमने हटाई भी है, हमें दिख नहीं रही. एंड मीडियल वॉल वी कैन सी इज द लेटरल वॉल ऑफ इनर एयर. ठीक है, ये मीडियल वॉल जो है इज फॉर्म बाय द लेटरल वॉल ऑफ इनर एयर. और मीडियल वॉल पे वी कैन सी टू डिस्टिंक्ट characteristic features, the presence of oval window and the presence of round window, right? So again, repeating it again, the roof is formed by the tegment tympani. The anterior wall is, the characteristic feature is, it is the bony ridge separating from internal carotid artery and having two canals, एक pharyngotympanic tube के लिए और एक tensor tympani muscle के लिए. Anterior. Posterior में we can see superiorly the antrum to the adductus to mastoid antrum और उसके बाद एक pyramidal opening for stapedius muscle. Laterally हमारे पास tympanic membrane है. Below is the bony ridge that is separating from the internal jugular vein, right? Then coming to auditory ossicles or auditory bones. बोन्स हमारे पास मिडिल एयर में होंगी, 3 होंगी, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीस. एंड दिस इज हाउ दीज आर आर्टिकुलेटेड. ये मेलियस है, ये थोड़ा हैमर लाइक होता है, ठीक है. देन दिस इज द इनकस एंड दिस इज स्टेपीस, ठीक है. द लार्जेस्ट ऑफ दीज इज द मेलियस और इसका निमोनिक है मिस. This is the picture showing the parts of malleus, incus and stapes. We can see that malleus के lateral process है. This is the anterior process. Here the constrictor region is the neck. The dilated portion is the head of malleus, right? Head के ही side में we can see the articulation surface for M के बाद मिस में क्या आएगा? I for incus, right? यहाँ आके incus लगेगा, right? दिस इज इंकस. इंकस का शॉर्ट लिम होता है, लॉन्ग लिम होता है, राइट. और बीच में लिम्स के बीच में उसको बॉडी नाम दे दिया है. और जिस तरह मेलियस के ऊपर इंकस का आर्टिकुलेशन फेसिट था, इसी तरह यहाँ पे मेलियस के लिए आर्टिकुलर फेसिट, राइट. Then this is stapes. We can see we have the base of stapes, anterior posterior limbs of stapes and the head of stapes, right? So these are the 3 ossicles of middle ear. Then the middle ear has 2 muscles, tensor tympani and stapedius muscle. इन दोनों की अभी हमने बात की थी, राइट. एंटीरियर वॉल में हमारे पास कौन सा था? टेंसर टिम्पेनाई था. और पोस्टीरियर वॉल में हमारे पास पिरामिडल ओपनिंग थी फॉर स्टेपीडियस मसल, राइट. So this tensor tympani muscle is originating from the wall of auditory tube and walls of its own canal, tensor tympani, ठीक है, ये रहा, right. Insertion is on the handle of malleus, internal ear में जाके, ठीक है. Nerve supply is the mandibular division of trigeminal and the action is it dampens down vibrations of tympanic membrane. Then we have the stapedius muscle जो posterior wall में इसकी opening थी pyramidal, ये anterior wall में थी, that is in the posterior wall, right. Posterior wall में तो it's originating from the pyramid, the bony projection on the posterior wall of middle ear, गोइंग टू द नेक ऑफ स्टेपीस. अभी हमने स्टेपीस के वो पार्ट्स पढ़े थे. हेड था, लिम्स थे और फुट प्लेट थी, बेस था. तो लिम्स और हेड के बीच वाले रीजन को इन्होंने नेक बोलते हैं, राइट. सो वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट इट गोज ऑन टू स्टेपीस, राइट. द नर्व सप्लाई इज फेशियल नर्व, इम्पॉर्टेंट. इन दोनों की नर्व सप्लाई पूछते हैं,
ठीक है. And the action is same, that it dampens down the vibrations, but किसकी, स्टेपीज की, तभी इसका नाम स्टेपीडियस है. और टेंसर टिम्पेनाई का नाम इसीलिए टेंसर टिम्पेनाई है बिकॉज वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के लिए वाइब्रेशंस को डैम्पन कर रहे हैं. ठीक है. Now we come to the auditory tube, which connects the tympanic cavity to nasal pharynx. ठीक है. The posterior third is bony and anterior two-third is cartilaginous, and the action of this is that it equalizes the air pressure, right? So this is the auditory tube, जिसको हम स्टेशन ट्यूब भी कहते हैं. ठीक है. एंड इट इज़ हेल्पफुल इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर विद इन द एयर, राइट. ये पूरा हमारे पास मिडल एयर कंपार्टमेंट है. ठीक. और इसकी हमने बात की कि पोस्टीरियर हमारे पास पोस्टीरियर वन थर्ड एंड एंटीरियर टू थर्ड्स, राइट. तो इसका एंटीरियर टू थर्ड इज कार्टिलेजिनस एंड पोस्टीरियर वन थर्ड इज बोनी. Whereas हमने जो एक्सटर्नल कैनाल पढ़ा था उसका आउटर वन थर्ड वॉज कार्टिलेजिनस, इनर टू थर्ड वॉज बोनी. ठीक है. इसका एंटीरियर टू थर्ड इज कार्टिलेजिनस एंड पोस्टीरियर वन थर्ड इज बोनी, राइट. इस पिक्चर को अगर याद रखोगे तो याद रहेगा ये वाली पिक्चर. Now let's discuss a little histological points for middle layer. इसमें जो tympanic cavity है, it is an air-filled space located in the vitreous part of temporal bone. It is lined by simple squamous epithelium, the tympanic cavity, which is continuous with the internal lining of tympanic membrane, and in its deepest two-thirds, however, the bone of tympanic cavity gives way to cartilage as it approaches the auditory tube, right? Okay. Similarly, if we see at the epithelial covering, it becomes pseudostratified ciliated columnar as it approaches the auditory tube. ठीक है. जो हम अनर साइड पे उसकी सिंपल स्क्वामस सिंपल क्यूबॉइडल थी, आगे जाके ऑडिटरी ट्यूब तक ये pseudostratified ciliated columnar हो जाएगी. ठीक है. The lamina propria over the bony wall adheres to it tightly and does not contain glands. Important. But the lamina propria overlying the cartilaginous portion contains many mucous glands whose ducts open into the lumen of the tympanic cavity. Right? So this shows जिस तरह हमने एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब की बात की थी, उसके भी कार्टिलेजिनस पोर्शन की स्किन में ग्लैंड्स वगैरह थे, राइट. इसमें भी कार्टिलेजिनस पोर्शंस भी हैं. और along with these glands we have the goblet cells and lymphoid tissues also present in the vicinity where it is opening into the nasopharynx. And then we discussed that when we look at its medial wall, हमने दो विंडोज़ की बात की थी, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो. ये कनेक्ट कर रहे होते हैं मिडिल एयर कैविटी को इनर एयर के साथ. ठीक है. ये दोनों विंडोज़ भी हमारे पास मेम्ब्रेन कवर्ड होती हैं. द बोनी ऑसिकल्स जो मिस है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज, these are articulated by series of joints, synovial joints होंगे और लाइन कर रहे होंगे ये simple squamous epithelium से. Malleus is attached to tympanic membrane and with the incus interposed between it and the stapes, right, which in turn is attached to the oval window. ये oval window पे जाके stapes का foot plate और base लगेगा. दो हमारे पास जो मसल्स थे टेंसर टिम्पेनाई स्टेपिडियस मिडल लेयर में, दे बोथ आर द स्केलेटल मसल्स एंड दे मॉड्यूलेट द मूवमेंट ऑफ the tensor tympani modulates the movement of the tympanic membrane. In stapedius it dampens the vibrations by moving the stapes, राइट. तो इन डैम्पनिंग का इफ़ेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज द लाउड साउंड्स दे माइट डैमेज द इनर एयर स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे वो उन साउंड वेव्स को
कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम स्टेबलाइजर्स लगाते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में। वो क्यों? क्योंकि अगर बाहर से करंट हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, वो उसको नॉर्मल रेंज में करके ही अप्लायंस तक पहुँचाएगा। तो इसी तरह ये जो हैं, अगर साउंड वेव्स हार्श हैं, लाउड हैं, उनको नॉर्मल रेंज में करके आगे कन्वे करेगा, ठीक है, ताकि वो डैमेजिंग ना हो। Okay, so I hope that we have covered all of the main objectives for today's lecture. Uh, if you find any queries, you have my email address. You can tell me over there. I'll inshallah reply to that. Achha, one thing more I wanted to discuss is uh, you have to write a note on it, because it's not a very long topic. It's better you write a note, so in exams that will be easy for you people to just open up your copies and read that note properly if you have made it properly. क्योंकि अभी लेक्चर हुआ है, अभी ही चैप्टर पढ़ लो, एडिशनल कोई पॉइंट्स जो आपको मिल रहे हैं वो नोट्स बना लो, सो दैट इन एग्ज़ाम्स एयर का कंटेंट पढ़ने के लिए आपको दो दो तीन तीन बुक्स ना पढ़नी पड़े, राइट। उसका हिस्टोलॉजिकल कंटेंट भी कवर वहीं पे लिख लो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग द डेवलपमेंट ऑफ एयर। सो एक ही जगह पे आपका पूरा ही नोट हो जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मीट यू इन अनदर लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।